Topic is signal to noise ratio in a single sideband suppressed carrier system. Before starting the signal to noise ratio for a single sideband suppressed carrier, can you tell me what do you mean by single sideband suppressed carrier wave? Yes, any one of you? Unmute yourself. मैम इसमें सिंगल बैंड में इंफॉर्मेशन होगी और जो कैरियर होगा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी. Which one band is allowed in single sideband suppressed carrier wave? मैम आइदर अपर और लोअर. Upper or lower. It depends on your requirement whether you are using upper sideband or lower sideband. Carrier is suppressed or one band is suppressed. Because in AM wave we have two sidebands, upper and lower. That is maximum. Higher sideband USB, upper one, and lower one is LSB. And third one is carrier. Carrier frequency component is also suppressed in this. Now see here. In this system, S of T is your wave, that is single sideband suppressed carrier wave. N of T is your noise signal. They both mix up and then this output is given as an input to the band pass filter. What will do? Band pass filter क्या करेगा? हाँ जी. मैम जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उनको आगे जाने देगा. Required frequency spectrum जो band है वो पास कर देगा. Rest all will reject. And this V1T is the input of product modulator. V1T is one input of the product modulator. Second is generated from the local oscillator, that is C of T is equal to cos 2 pi FC T. Then the output of product modulator is V2T, that is equal to V1T into C of. And what is the purpose here? What is D of T? That is your demodulated output. Demodulated means we have to extract the message signal back. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Now any question in this diagram? Please note down this block diagram on your notebook. Then we will do mathematical expression for signal to noise ratio. अब signal to noise ratio first निकालेंगे channel की, then output की. Please draw it. Done. Shall I continue? Yes, ma'am. Now, very first is single sideband suppressed carrier modulated wave. Suppose we have assumed here lower sideband. Lower sideband means frequency FC minus FM. When we are talking about upper sideband, then frequency is FC plus FM. Do you remember this? That is a sum of two frequencies, that is called upper sideband. And the difference of two frequencies is called as lower sideband. और इसमें assume किया हुआ है lower sideband. That's why here FC minus FM. That is the suppressed single sideband suppressed carrier modulated wave AM AC by 2 cos 2 pi FC minus FM into T. Clear है AM AC by 2 क्यों है? Because हम एक बैंड की बात कर रहे हैं. Is that clear, students? Yes, ma'am. Now here your amplitude is AM AC by 2. Now we have to find out the average power of this suppressed carrier wave. How we can find out? And formula for this is VM by root 2. Instead of VM, you have to write AM AC by 2.
dm की जगह पे आप अपना एम्पलीट्यूड पुट करो from the above equation, this one, and find out the average power. Is it same or not? Tell me. Yes, ma'am. Same. Okay. Second is your average power of noise in the message bandwidth, that is W into N naught. W is your message bandwidth, N naught is your noise output signal. After this, you have to calculate the signal to noise ratio of channel, because we have already calculated average power of single sideband modulated wave and average power of noise. Divide both. Suppose this is your equation number 1 and 2. Divide equation number 1 and 2 to achieve the signal to noise ratio of channel. Do it fast and verify the result. Yes, done. Yes, ma'am. अगर हम अपर साइड बैंड assume करते हैं, then what is the average power of single sideband suppressed carrier wave? Is it same or different? Ma'am, same. Same. Why? Because amplitude remains same for upper sideband. Just difference is here. You have to write here FC plus FM for upper sideband. That is the change. So हमने सिग्नल टू नॉइस रेशियो चैनल की निकाल ली, अब आउटपुट की चेक करेंगे. For this, you have to first write down the output of V1T. What is the output of V1T? That is a sum of S of T and N of T. N of T is your noise signal. That is a mixture of in-phase component and quadrature component. Do you remember? We have already derived for AM and double sideband suppressed carrier wave. याद है आपको? Yes, ma'am. Okay. And S of T भी आपको पता है क्या है? So S of T value is this, that is AM AC by 2 cos 2 pi FC minus FM into T. Again lower sideband की बात कर रहे हैं, and this one is your noise component, in phase component, and this one is quadrature component. And also local oscillator is used here to generate the C of T signal, that is equal to C of T is equal to cos 2 pi FCT. Please note down equation number 3. This one 4 और ये आपकी बन गई 5. Done. Do it fast and revert. Yes, ma'am. Done. Okay. Now next, after this, we have to find out the output V of T, that is the output of product modulator. और product modulator को कौन सी दो inputs आपने provide करी थी? Tell me. Product modulator को कौन सी दो inputs दी थी हमने? One is Ma'am, your V1T or yes, V1T, that is the output of band pass filter, is given as an input to the product modulator. Second input from local oscillator C of T, that is equal to cos 2 pi FCT. And what is the output of product modulator? Anji, ma'am, product of both signals. product of both, that is equal to V2T. Equation number 6. Anji, rest all friends. Are you solving? Yes. आउट ऑफ 9 सिर्फ एक स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है अरुण, और कोई नहीं कर रहा. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स. राजन,
यस मैम। हाँ जी, कर रहे हो? मैम अभी B2T करा। ओके, कौन सी इक्वेशन पे पहुंच गए? मैम 6th इक्वेशन 6. पर। Okay. Next, now in 6th equation, you have to put the value of V1t and C of t. V1t कौन सा है आपका? Equation number 4. And what is the value of C of t? That is equation number 5. Put both the values of V1t and C of t in equation number 6 and modify your equation. Do it fast. इतना जब हो जाए yes. Yes, ma'am. Done. Now here फर्स्ट टर्म बन गई ए एम ए सी, ये होल टर्म के साथ ये cos 2 pi एफ सी टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज योर कैरियर सिग्नल. नाउ इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ये बन गई ए एम ए सी बाई 2 cos 2 pi एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी इंटू cos 2 pi एफ सी टी. सेकेंड वन इज योर इन फेज कंपोनेंट ऑफ नॉइज, वहां पे ऑलरेडी cos 2 pi एफ सी टी था, एक और बन गया, वो बन गया cos square 2 एफ सी टी. Second is quadrature component of one is sine and second is for cos 2 pi fct. Done? Yes, friends. Yes, ma'am. Okay. Now here you have to apply the formula, that is cos a cos b. Formula क्या होता है? 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है? Any one of you? हाँ जी. Yes, friends. Cos a cos b. 2 cos a cos b is equal to cos a plus b cos a minus b. अब 2 नहीं है उसके साथ तो 2 डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड. Are you getting my point? Yes. मैम ये कहाँ पर अप्लाई होगा? Here cos a cos b term. ठीक है? Yes. In first term cos a cos b है, फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b is equal to this. अब 2 नहीं है उस साइड तो होल डिवाइड हो जाएगा 2. That's why यहाँ पे 4 बन गया. Is that clear? Yes, ma'am. Modify using trigonometry formula. यहाँ तक बन गया कि नहीं करना? Only one part of equation. Cos a plus b, cos 2 pi is common, fc minus fm plus fc, वो बन गया 2 fc minus fm, 2 pi into t is common. सेकेंड माइनस करो, fc will cancel out, fm रह जाएगा. Done? Yes, ma'am. Okay. Second is here, see here, that is cos square 2 pi fct. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos square theta is equal to, yes, 1 plus cos 2 theta by 2. Yes, ma'am. हाँ जी, तो थीटा की जगह पे क्या है? 2 pi fct. अगेन मॉडिफाइड, इसे भी मॉडिफाई करो. डन? दैट इज NIT, इन फेज कंपोनेंट ऑफ नॉइज. हाँ जी, रेस्ट ऑल स्टूडेंट्स. You can also respond. Amandeep. Yes, ma'am. हाँ जी, कर रहे हो? Yes, ma'am. Okay. अब लास्ट is your quadrature component here, sin A sin B.
और आपको फॉर्मूला बताएगा 2 sin A sin B किसके इक्वल होता है? तो sin A cos A, यस मैम cos 2 sin 2 थीटा। sin 2 A, A ले रही हूँ मैं थीटा की जगह पे, दैट इज इक्वल टू sin 2 A। थीटा ले दो तो यहाँ पे भी थीटा आएगा। अब बट यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ थीटा और ए 2 पाई एफ सी डी, तो सेकेंड इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। अगेन मॉडिफाइड, ये बन गया एन क्यू टी साइन 4 पाई एफ सी टी बाई 2। एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? Yes, Sonia, Rajan, Mithilesh, Kunal, Krishna, Dusimar and Harpreet. No, ma'am. Okay. Then friends, यस मैम क्लियर है। अब V2T आउटपुट हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे हम? See your block diagram first. V2T is applied to the low pass filter. Why? We have to restrict the demodulated output. What is the purpose of demodulator? To restrict the original signal back. और original signal आपका कौन सा है? That is your message signal. अब इतना हमने V2T find out कर लिया। अब इसको V2T को लो पास फिल्टर में से पास करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड सिग्नल कौन सा होएगा? That is D of T is equal to AM AC by 4 cos 2 pi fmt plus nit by 2. You can check here. कैसे? इसमें देखो AM AC by 4 प्लस बन रहा है cos 2 pi 2 FC minus FMT. That is not required. क्यों? क्योंकि इसमें मैसेज सिग्नल नहीं है। अगर सेकंड टर्म की बात करें that is AM AC by 4 cos 2 pi FMT. Is it required? Yes. यस यस क्यों? क्योंकि इसमें मैसेज सिग्नल है। सिमिलरली ये इन फेज कंपोनेंट ये दो पार्ट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। वन इज 1/2, सेकेंड इज cos 4 pi fct by 2। तो जो 1/2 है इंटू NIT वो हम नॉइसी सिग्नल ले सकते हैं। क्यों? क्यों उसमें ना तो नॉइस है ना तो कैरी सॉरी ना मैसेज सिग्नल है ना कैरियर सिग्नल है, तो उस पार्ट को आप ले सकते हो। बट दिस क्वाड्रेचर कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? इसमें साइन 2 pi fct 4 pi fct है, that is a harmonic component, frequency component ना जो required ही नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो योर आउटपुट इज D of T, that is the output of low pass filter, वो इतनी आ गई। Any question in this? आपने अपनी कॉपी पे इक्वेशन नोट डाउन करी है? expand this equation and check कि इतना रिजल्ट आ रहा है लो पास फिल्टर का कि नहीं। and D of T is the output of low pass filter. Then tell me. Yes. यस मैम। Okay. Now you have to find out the average power of the demodulated signal. Then हम noise power देखेंगे आउटपुट में कितना। फर्स्ट एवरेज पावर निकालो, इसमें कितनी है? ये है आपका एम्पलीट्यूड, वो पुट करके by √2 होल स्क्वायर करो, you will get this. Done. Yes. यस मैम डन। Okay. Then your average power of noise at the output. How? NIT by 2, NQ by 2, half is 1/4. That is W N naught by 4. That is your average power of noise at the output. Now you have to divide both. You will get signal to noise ratio of output. That is a ratio of average power of demodulated signal and average power of noise at output. और आपकी output इतनी बन गई। Verify it. Done, students?
मैम वो पावर ऑफ एवरेज पावर ऑफ नॉइस में 4 कैसे आता है मैम? जैसे लास्ट में किया था, इट्स नॉइस सिग्नल इज NIT/2 एंड सेकेंड इज NQ/2 होगा। क्लियर है? यस मैम। फर्स्ट में हम ले रहे थे NIT और NQ, तो उसमें WN0 थी आउटपुट नॉइस की। इसमें अब 4 कैसे हुई? 1/2 into 1/2, that is 1/4. डन। यस मैम। डबल साइड बैंड में भी ऐसे किया था, क्यों? क्योंकि हम इसे बैंड्स को स्प्लिट कर रहे हैं। AM के केस में एक ही रहेगी, ओनली वन। डिवाइड बोथ एंड चेक कितना आंसर आ रहा है। यस। यस मैम, डन। Okay, that is your signal to noise ratio for single sideband. Now we have to calculate the figure of merit. And what is the figure of merit for receiver? Figure of merit is ratio of signal to noise ratio of output for single sideband suppressed carrier wave to the signal to noise ratio of a channel for a single sideband suppressed carrier wave. Now divide both. आपकी जो figure of merit आएगी वो 1 आएगी. Verify it. फर्स्ट आपने ये वाली लेनी है, दिस वन, दैट इज चैनल, और आउटपुट की अभी हमने निकाली है। डिवाइड सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ आउटपुट बाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर चैनल। डन। यस मैम। Okay. Now any question in signal to noise ratio for a AM double sideband suppressed carrier and single sideband suppressed carrier? Have you received this PPT? मिल गई है सभी को PPT? यस मैम। Okay, any doubt? मैम इन फेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं। आप लिखते ए माइनस आइटा भी लिखते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। दैट इज इनफेस कंपोनेंट, रियल कंपोनेंट जिसे बोलते हैं। क्वाड्रेचर कंपोनेंट जिसमें फेज शिफ्ट आ गई, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। यस मैम। इन फेस कंपोनेंट मींस कि जो आपकी नॉइस है वो इन फेस है आपके सिग्नल के साथ। तभी हम हर बार NIT साथ में लेके चल रहे हैं, नॉट ए क्वाड्रेचर कंपोनेंट। ये देखो, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इज अगेन न्यूमेरिकल आ जाता है। यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। द सिग्नल पावर निकालो, नॉइस पावर निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपली क्या फॉर्मूला है? इन टर्म्स ऑफ डेसिबल क्या फॉर्मूला है? हाउ टू कैलकुलेट इट? प्लीज नोट डाउन। फर्स्ट वन इज योर definition of signal to noise ratio, and the formula is S/N is equal to signal power to noise ratio of signal to noise power is called signal to noise ratio. जितनी ज्यादा नॉइस पावर कम होगी उतना सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ये आपका थर्ड यूनिट में पूरा चैप्टर होएगा प्रोबेबिलिटी वाला इन ADC, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में। वहां पे ये आपके काम आने हैं ये कंसेप्ट्स। क्लियर है? यस मैम। ये सिंपली फॉर्मूला है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन डेसिबल? फॉर्मूला इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो डेसिबल इज इक्वल टू 10 log 10 PS/PN। आप अपनी लैब में भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें ये फॉर्मूला डेसिबल के लिए। And what is the power in terms of voltage? We all know power is equal to V into I. And V is equal to, yes,
Ohm's law. IR. In terms of voltage, in terms of current, V की value put कर दी I into R into I, that is power as I square R. In terms of voltage निकाल ली हमने. अब in terms of current क्या बनेगा? That is B by R. Put this value here, तो power क्या आएगी? That is I by into, yes students, first V as it is, put the value of current here, that is V by R, वो बन गया V square R. Is that clear? अब सिग्नल पावर की बात Yes. करें, that is PS, तो सिग्नल पावर के केस में वोल्टेज क्या होगी? सिग्नल वोल्टेज VS square by R, that is your signal power. And what about the noise power? That is VN square by R. Put both the formulas of PS and PN values in this formula. You will get signal to noise ratio in decibel. कैसे? यहाँ पे put करो, ये बन जाएगा signal to noise ratio in decibel is equal to 10 log signal power as your VS square by R and your noise power is VN square by R. Now this resistance will cancel out. तो क्या रह गया? 10 log VS square by VN square. And can we write like this? हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं इसे? होल स्क्वायर. Yes, ma'am. और आपके लॉग की प्रॉपर्टी है, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. दैट इज इक्वल टू 20 log VS by VN. That is signal to noise ratio formula in decibel. In terms of voltage पूछो तो ये फॉर्मूला, in terms of power ये फॉर्मूला. Done? तो मेनली यहाँ से 3 formulas generate हुए, this one, second and this last, third. Any question? No, ma'am. This is all about the signal to noise ratio. Now next one is your sampling. Have you heard it before? Yes, ma'am. कहाँ पे पढ़ा है हमने sampling? मैम फीडबैक लूप में और जब Feedback loop. आउटपुट का Yes, sampling कहाँ पे पढ़ा है? Any one of you? And G students. What is the purpose of sampling here? हाँ जी. Why do we use sampling? मैम जिसमें इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू लेते हैं. Okay. Any one of you? Yes, Amandeep. Gursimar. Krishna. Rajan.
Unmute yourself. Can we convert analog signal to digital? Yes, ma'am. How? Ma'am, by sampling. By sampling. अब बताओ कहाँ पे पढ़ा है? मैम जब कॉन्टिन्यूअस वेव को डिस्क्रीट में मैम करते हैं Convert करते हैं। सैम्पलिंग। Do you remember कि signals and system में हमने sampling पढ़ी है? यस मैम। आगे या तो next topic is sampling. In next lecture हम ये discuss करेंगे. In this we have to discuss